Hello, good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic of your syllabus, scope of business economics. In the last video, we discussed the definition of business economics. Business economics is integration of economic theory with business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by the management. Okay, how to use logic of economics, theories of economics for business practice. It is an integration, it is a link between traditional economics and business practice. Then we also discuss the characteristics. Today we are going to discuss the scope का meaning क्या है? Field of study. Okay, so in the scope of business economics we will study the problems that have to face the manager has to face during the production process or during the process. फील्ड ऑफ स्टडी. इन शॉर्ट हम लोग स्कोप में डिस्कस करेंगे कि आप पूरे साल में बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो वी विल take some overview what are you going to study in the semester 1 and semester 2 syllabus. Okay, so there are two types of issue: operational issues and environmental issues. Operational issues matlab it is business operation within the purview of the firm. Internal issues: first, demand analysis and demand forecasting. Demand analysis occupies very important place in the scope of business economics. Why? Because decision regarding production, decision regarding investment ultimately depends on the demand. हम लोग उसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे जिसकी डिमांड हो. डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वो सब डिपेंड किस पे रहेगा? डिमांड एनालिसिस. अभी ये समय में इन दिस टाइम कोई भी कंपनी टाइपराइटर का प्रोडक्शन नहीं करेगी, बिकॉज ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विच आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर. ओके, सो बिफोर टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट one has to study demand analysis. So demand analysis, law of demand we will study, factors, and demand can be influenced by many factors like price of the product, income, price of substitute, etc. So these are known as factors affecting demand for the product. अथवा इन्हें શું કહેવાય? demand determinants કહેવાશે. At the same time, demand elasticity, elasticity of demand forecasting we are going to study in this semester. So the first point is demand analysis. Second is cost analysis. Cost analysis also occupies a very important place, because the objective of any firm is to produce output at minimum cost or least cost. ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઓછામાં ઓછા ખર્ચ વડે વધુમાં વધુ ઉત્પાદન કરો. But how to minimize the cost? कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए? यू शुड हैव नॉलेज ऑफ कॉस्ट एनालिसिस. सो in the business scope of business economics we will study different types of cost: fixed cost, variable cost, then marginal cost, total cost, cost output relationship in the short run, cost output relationship in the long run we are going to study. Next, pricing policies and practices. Pricing policy, very important point. Pricing policies and practices. Here very important points should be noted, that success or failure of the firm largely depend upon the appropriate price policy. आपको समझ में नहीं आया होगा अभी कि क्यों इतनी प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर प्राइसिंग प्रॉपर नहीं होगी सो इट कैन अफेक्ट द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म and ultimately the total profit of the firm. Okay, suppose I say
द प्राइस ऑफ द बुक इज ₹200। इसका मीनिंग क्या है कि पीपल आर विलिंग टू स्पेंड ₹200 फॉर द बुक। अगर मैं इस बुक की प्राइस ₹100 रखूं तो मुझे जितनी रेवेन्यू मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। ओके, अगर मैं उसकी ये बुक दिस बुक की प्राइस ये बुक की प्राइस मैं 700 और सपोज 800 रख दूं तो क्या होगा, डिमांड फॉल हो जाएगा, रेवेन्यू फॉल हो जाएगा, प्रॉफिट फॉल हो जाएगी। सो आई हैव टू डिसाइड द प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ द बुक। गेटिंग माय पॉइंट? कितनी प्राइस पीपल, ये कितना अमाउंट पीपल उस पर खर्च करना चाहते हैं, हाउ मच मनी पीपल आर विलिंग टू स्पेंड on the book. So it is not that easy to take decision. Okay, so pricing policy is very very important. So in price output we will discuss market structure, perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, how price output determination in the long run, in the short run we will discuss. Next, profit planning and the break even point. This is the most important point. Why firm is operating? The objective of any firm is to earn maximum profit. Firm, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट फर्म प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, in the short run or for 6 months or year, if some firm is not able to earn profit, it's okay. But in the long run, that is only criterion to measure success or failure of the firm is profit income. So profit planning is there, and इसके साथ होगा break even analysis. What is break even analysis? Where total revenue is equal to total cost, no profit, no loss position. Okay, so break even point आखिर क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर लॉस स्टॉप्स एंड प्रॉफिट स्टार्ट्स। ओके, सपोज अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹10 lakh इन एक्स कंपनी, तो क्या सोचेगा कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे कब पहुंचूंगा? इफ फर्म सेल 1000 यूनिट एंड टोटल रेवेन्यू हो गए 10 lakhs, तो फर्म को क्या कि ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल इज नाउ 1000 यूनिट। जब वो 1000 यूनिट सेल करेगा तब क्या कहां पहुंचेगा? ब्रेक इवन आना। જ્યારે ફર્મ 1000 યુનિટ વેચશે ત્યાં ક્યાં પહોંચશે? બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ। એટલે this is the point where loss stops and profit start. अभी 1001, 1002 જેટલા યુનિટ એ વધારે વેચશે 1000 થી વધારે, 1001, 1002, 1005, 2000, એટલું એને શું મળશે? પ્રોફિટ મળશે। So whenever we discuss profit analysis, we have to study break-even analysis. So break-even analysis is also included in your syllabus. We are going to study in the second semester break-even analysis. At the same time, profit theories we will also study. Capital budgeting and investment decision. What is capital budgeting? Okay, capital. There are 4 factors of production: land, labor, capital, and entrepreneur. Rent, wages, interest, and profit. You have all studied. ઉત્પાદનના 4 સાધનો છે ગુજરાતીમાં: જમીન, મૂડી, શ્રમ and નિયોજક. Capital. Capital is a scarce factor, and it obtained at cost. Capital का cost क्या है? Interest. If I borrow capital from bank or from somebody else etc., मुझे क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट। सो डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग मस्ट बी टेकन विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन। सो यार कैपिटल का मीनिंग, बजटिंग का मीनिंग क्या है? हाउ टू सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। गेटिंग माय पॉइंट? हाउ टू सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, और
एकदम डिटेल डेफिनेशन उसकी देखेंगे तो कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग, जनरेटिंग, evaluating and finally selecting the most profitable investment proposal. थ्री प्रपोजल है ए, बी एंड सी. पहले क्या करना है? कंसीव. यू हैव टू कंसीव. આપણે કોઈને કે ને તમે બેબી કન્સીવ કરે છે, એમ કે કન્સીવ કરે છે मतलब कि हमको जो भी बेसिक आइडिया है वो पहले हमारे माइंड में होगी. कंसीव कर, वी हैव टू इमेजिन, कंसीव, देन जनरेट प्लान. सेकेंड स्टेप इज ए जनरेट. थर्ड स्टेप इज इवेल्युएशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल. हाँ, ए प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा है. हाँ, ए प्रोजेक्ट में क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई, क्वालिटी इज वेरी गुड बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई. इन बी प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीडियम है, क्वालिटी ऑल्सो गुड. इन सी प्रोजेक्ट कॉस्ट इज लो बट क्वालिटी इज नॉट गुड. सो ऑब्वियसली बी शुड बी सेलेक्ट, क्योंकि ए प्रोजेक्ट में so from cost analysis angle, from quality angles, or there are many approaches we are going to study in the future, but you have to just understand that capital budgeting is a very very difficult decision. How to select the most profitable, સૌથી જે નફાકારક પ્રોજેક્ટ છે કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવું, એના માટે આપણે શું કરવા પડે? ઇવેલ્યુએશન કરવું પડે, દરેક એંગલથી જોવું પડે છે. ઓકે, and finally we can select the project. Okay, so this is capital budgeting. Next is strategic planning. In Gujarati આપણે શું કહીશું એને? વ્યૂહ રચના. Strategic planning means planning for future, forward planning. What will be the strategy of the firm in the future, long term decision, etc, etc. Now last is environmental issues or external issues. Environmental issues here, not environment what you are going to study in first year become land, forest and atmosphere, etc. Here economic environment, political environment, social environment you have to study. We have already discussed in the characteristics of business economics that even though business economics is micro in character, but it also studies macro variables. So macro variable क्या है? external. This is external issues. Whenever firm is planning or firm is producing something or from अगर कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है तो उसको you have to study what is economic environment, what is government policy, what is social environment, what is political environment. He has to study. Okay, आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बराबर नहीं है, बार बार अटैक हो रहा है, उस जगह के आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. ओके, देयर शुड बी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देयर शुड बी गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज. गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर एक्सटर्नल इश्यूज, ये आपके कंट्रोल के बाहर है, इवन दो इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फर्म इन वेरी सिग्निफिकेंट मैनर. So these issues also should be discussed. So I am repeating. First is demand analysis and demand forecasting. Second is cost analysis. Third is pricing policies and practices. Fourth, profit planning and break-even analysis. Capital budgeting and investment decision, strategic planning. And last is environmental issues. That's all for today. Thank you. Thank you very much.